Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today is my fifth consecutive lecture on electrochemistry. So let us start. Today our lecture is effect of dilution on electrical conductivity. So what will be the effect of dilution on electrical conductivity that we have to study? From examination point of view in board exams, this is more frequently asked question. A 1 mark question there. तो अगर हम बताएंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या हम इनवर्सली ऐसे भी बता सकते हैं द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होती है व्हेन वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन और व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर? सो अगर आप if I am going to recapitulate you from in the previous lectures of my previous lectures, in lecture number 2 I have told you that what is happening to the electrical conductance of the solution when we are dilating the solution. So already I have told that whether you are having a weak electrolyte or a strong electrolyte, the electrical conductance of the solution is increasing. Electrical conductance, not conductivity. Electrical conductance of the solution is increasing on dilution. जब भी हम dilution करते हैं तो conductance is increasing. ठीक है? So but what is happening to the electrical conductivity? देखा गया है तो the electrical conductivity of the electrolytic solution on dilution is decreasing. The electrical conductivity जो है ये decrease हो रही है when we are diluting the solution. So what is happening that वो मैं बताने जाऊंगा यहाँ पे. So let us suppose you are having an electrolytic solution. ठीक है, आपको यहाँ पे electrolytic solution है and you are taking it is 1 cubic centimeter. So 1 cubic centimeter of this electrolytic solution, the conductance of that 1 cubic centimeter of the solution will be its conductivity. ये उसकी conductivity होगी. ठीक है, तो now this is a more concentrated solution. Now what I am doing, I am adding water, I am diluting the solution. So when I am diluting the solution, what is happening, the volume of the electrolytic solution is increasing. So जब volume of the solution is of the electrolytic solution is increasing, so what is happening now, if let us suppose if it is a strong electrolyte, so this strong electrolyte there will be there will be a decrease in the interionic interactions between the ions. So with the result the ions will feel free and occupy the whole space of that volume. So means that the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution, अगर हम कहेंगे कि number of the ions decrease होंगे in this 1 cubic centimeter of the solution और increase होंगे, तो मैं कहूँगा the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution will decrease. Why it will decrease? Because some of the space in this 1 cubic centimeter of the solution will be occupied by the water molecules. These water molecules will replace the ions. The ions will feel free. They will move throughout the whole solution. Now the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution will decrease. When that will decrease the this electrical conductivity. इस तरह से electrical conductivity decrease होगी. लेकिन अगर हम देखेंगे what will happen to the conductance? The conductance of the solution is increasing. क्यों increase हो रहा है? Because there will be a decrease in the interionic interactions in case of a strong electrolyte. So when there is a decrease in the mobility of the solution, mobility of the ions will increase, so that will increase the conductance of the solution. So conductance increase हो रही है लेकिन conductivity decrease हो रही है. Conductivity क्यों decrease हो रही है? Because the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution is decreasing because some of the space of this 1 cubic centimeter is occupied by the water molecules. ठीक है? So replacing the already existing ions in the concentrated form. ठीक है? So now इसी तरह likewise if I am going for a strong electrolyte, so strong electrolyte में भी if I am going for a weak electrolyte, तो weak electrolyte में जब हम dilution करते हैं तो number of ionization of the electrolyte is increased. When ionization of the electrolyte is increased means that the number of the ions, वहाँ पे number of the ions increase हो रहा है. तो जब number of the ions will increase, these ions will feel free to occupy the whole space. Now they have more space to occupy because on dilution the volume of the electrolytic solution is increasing. So with the result the number of the ions within this 1 cubic centimeter of the solution is decreasing. So when the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution is decreasing, so what is happening to the electrical conductivity? The electrical conductivity is getting lowered up. Okay, so let us write down here. By definition, electrical conductivity is the conductance of 1 cubic centimeter of an electrolytic solution. On dilution, the number of ions in
1 cubic centimeter of the solution decreases, which in turn decrease the value of copper and electrical conductivity, though the conductance of the solution increases. अगरचे conductance of the solution increase होता है. क्या मैंने लिखा? By definition, electrical conductivity is the conductance of 1 cubic centimeter of the solution. ठीक है ना? लेकिन on dilution, the number of the ions in this 1 cubic centimeter of the solution is decreasing, which in turn is decreasing the value of the electrical conductivity, though the conductance of the solution is increasing. लेकिन अगर हम देखेंगे what is happening to the this conductance of the solution, it is increasing. ठीक है? Now we have one more topic, that is effect of dilution on molar conductivity or equivalent conductivity. So हम molar conductivity लेंगे या equivalent conductivity. So what is the effect of the dilution on the molar conductivity or the equivalent conductivity? तो यहाँ भी मैं बताने जाऊँगा कि ऑलरेडी मैंने कहा है ये पॉइंट कि जब भी हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द आयंस. Greater the speed of the ions, greater will be the conductance of the solution. इसी तरह it is depending upon the number of the ions in the solution. जितने number of the ions, it means that जितने number of the ions increase होंगे उतना ही electrical conductance increase होगी. And number third, that is the charge of the ions. So greater the charge of the ions, greater is the electrical conductance. So क्यों? अगर हम देखेंगे conductance is with which current flows through the conductor. हमें पता है as per the definition of the current, it is I is equal to Q by T. Means that as the charge is increasing, the current this electric current will increase. And electric current will increase. That means that electrical conductance is increasing. So means that this electrical conductance also depends upon the charge on the ions. ठीक है ना? तो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द आयन. जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा. जितना करंट ज्यादा होगा उसका मतलब है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी. सो ऑन दीज थ्री फैक्टर्स इट इज डिपेंडिंग. लेकिन यहाँ पे फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर हम कहेंगे, चार्ज ऑफ द आयन्स इज द सेम या चार्ज चेंज नहीं होगा, लेकिन what is changing on dilution, it is the speed of the ions and the number of the ions. So those two factors are changing on dilution. So when I am talking about what is happening to the electrical conductivity or what is happening to the molar conductivity or the equivalent conductivity on dilution, और देखा ये गया है both are increasing with the increase in the dilution. जब भी हम dilution को dilution करेंगे किसी भी electrolytic solution को, वहां पे molar conductivity as well as the equivalent conductivity is increasing. लेकिन एक चीज है, in case whether you are having a strong electrolyte or a weak electrolyte, there this molar conductivity or equivalent conductivity is increasing on dilution, both in case of a weak electrolyte and a strong electrolyte, but to the different extents. मतलब किसी में कम हो रहा है, किसी में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, किसी में ज्यादा मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, किसी में कम मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. वो मैं बताऊंगा किस में ज्यादा और किस में कम हो रहा है. सो लेट अस गो फॉर कि पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जनरली स्पीकिंग the molar conductivity or the electrical or the equivalent conductivity of an electrolytic solution increases with the increase in the dilution. That will be our first point. Now what will be the effect of dilution? या मैं लिखूंगा in case if you are having a strong electrolyte. So now चलो पहले मैं ये पॉइंट लिखूंगा. The delta M value for both weak and strong electrolytes, ठीक है, increases with increase in dilution, though to different extents. अगर हम देखेंगे to different extents, it is increasing the molar or equivalent conductivity of weak and strong electrolytes when we are diluting the solution.
ठीक है, दो टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. सो अगर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, लेट अस सपोज वी आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, let us suppose we are having a sodium chloride, sodium positive and chloride ions, and this electrolytic solution of sodium chloride will be having sodium and chloride ions. But when I am speaking, it is a concentrated solution. It is a concentrated solution of sodium chloride. So these sodium and chloride ions will be very close to each other because of the strong inter-ionic interactions between the ions. So because there is a strong inter-ionic interactions between those oppositely charged ions. So जो ये inter-ionic interaction है जो हम Columbus law के जरिए से बताते हैं, it is F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where this K is the electrical permittivity of the free space, which is having a value of 9 into 10 to the power 11 Newton meter square per coulomb square. ये वैल्यू देती है. So this is the electrostatic force between these two oppositely charged ions. ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन में. तो जब हम बात यहाँ पे बात करेंगे, when we are having a concentrated electrolytic solution of sodium chloride, there will be strong interionic interactions between the oppositely charged ions of the electrolyte. So what is happening, जब हम इसमें dilution करेंगे, जब हम इसमें water add करेंगे, when we are increasing the dilution, means that in turn हम बता सकते हैं we are decreasing the concentration of the sodium chloride. ठीक है. So what is happening now, these water molecules, already मैंने कहा है जब मैंने conductance पढ़ा है, these water molecules will come in between these sodium and chloride ions, with the result the force of the attraction is overcome. The electrostatic force of the attraction of these sodium and chloride ions will be overcome by these water molecules because of intervening between these oppositely charged ions. There will be the decrease in the interionic interactions. So जब यहाँ पे decrease interionic interactions होंगे, तो these sodium and chloride ions will be free to move, means that there will be increase in the mobility of the ions. तो जब speed of the ions यानी mobility of the ions increase होगी, so what will happen to the molar conductivity? The molar conductivity of the solution will increase. तो अगर हम कहेंगे in case of a strong electrolyte में क्या होता, what is happening to this strong electrolyte by dilution, by when we are diluting the electrolytic solution of a strong electrolyte, there is decrease in the interionic interactions, and when there is decrease in the interionic interactions, there is an increase in the mobility of the ions, and when there is increase in the mobility of the ions, there is the increase in the molar conductivity or molar conductance of the solution, molar conductance. लेकिन एक चीज यहाँ पे important है, what is that, कि number of the ions remain the same. Whatever was previously there, that after dilution there will be the same number of the ions. क्योंकि for a strong electrolyte it is already completely dissociated into its ions under all concentration. So whether you are having a strong when you are having a strong electrolyte, whether you are having it is diluted form or you are having its concentrated form, it is already dissociated completely into its ions. ठीक है ना. Only thing is dilution यहाँ पे क्या करता है, number of the ions is keeping remaining the same, but it is decreasing the interionic interactions, जिसकी वजह से mobility of the ions increase हो रहा है और उसकी वजह से molar conductivity increase हो रहा है यहाँ पे. तो ये point हम लिखेंगे यहाँ पे. In case of strong electrolytes, in case of strong electrolytes, on dilution, the interionic interactions are lowered, which in turn increase the speed of the ions and hence increase the value of molar conductivity. Though the number of
the ions remain same in the electrolytic solution. So in case of a strong electrolyte, on dilution the interionic interactions are lowered, which in turn increase the speed of the ions, ठीक है, and hence increase the value of delta m, though the number of the ions remain the same in the electrolytic solution. तो number of the ions same होते रहते हैं, लेकिन what is happening, interionic interactions are overcome, and when interionic interaction is decreased, there is an increase in the speed of the ions, which is increasing the value of the delta ion. Clear? That my point. तो molar conductivity increase होती है. अब यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा बाय मीन्स ऑफ ए ग्राफ, ठीक है. सो मैं दिखाऊंगा आपको कि हाउ दिस मोलर कंडक्टिविटी इज चेंजिंग बाय कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. क्लियर? फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम बताएंगे कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी बाय मींस ऑफ ए ग्राफ हम दिखाएंगे कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी चेंज होती है बाय मींस ऑफ कंसंट्रेशन. अगर हम यहां से यहां जाएंगे, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इंक्रीजेस मींस दैट अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, बट इफ आई एम गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन मींस हाईली कंसंट्रेट मींस यहां से फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो यहां पे कम concentration means that I am moving from highly concentrated solution to lower concentrated solution या least concentrated solution. means that I am यहाँ से अगर मैं कहूँगा कि concentration increase हो रहा है तो मैं कहूँगा यहाँ से dilution increase हो रहा है. Inverse है ना, there is an inverse relationship between the concentration and the dilution. So dilution increases in this direction and concentration increases in this direction. So now let us suppose अगर हम देखेंगे what is the graph coming out for a strong electrolyte when we are plotting it between the molar conductivity and the concentration of the solution, the graph comes out to be like this. ठीक है? ठीक है? तो अगर आप देखोगे व्हाट इज हैपनिंग, तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां, सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन इन दिस डायरेक्शन, मींस दैट देयर इज इंक्रीज इन द डाइल्यूशन इन दिस डायरेक्शन. सो ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन मैं यहां से जाऊंगा. ठीक है? व्हेन आई एम डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो अगर मैं बताऊंगा कि यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, so this is the value of the molar conductivity when you have a concentration of this. ठीक? Clear? Now what is happening, I am diluting the solution, I am decreasing the concentration. So means that if I am going to this point, मैंने इसमें dilution की, so what is happening to the molar conductivity of the solution? The molar conductivity of the solution is increasing on dilution. ठीक है ना? तो जितना मैं आगे आगे जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ मतलब मैंने इतनी डाइल्यूशन की, सो व्हाट इज हैपनिंग टू द मोलर कंडक्टिविटी, इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है? सो मीन्स दैट ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग electrolyte is increasing as shown graphically. But one point is there कि this molar conductivity is increasing to a little extent. अगर आप देखेंगे for a strong electrolyte, इसके बाद जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा वहां पे आप देखोगे इट इज फास्टली इंक्रीज, डीपली इंक्रीजिंग व्हेन वी आर गोइंग फॉर इट इज डाइल्यूशन. लेकिन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज the molar conductivity is increasing but to a lesser extent, it is increasing slowly. ठीक है? यहाँ पे slowly increase हो रहा है. तो जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, so what is happening, the molar conductivity is increasing. So एक पॉइंट आएगा, means that जब मैं यहां तक पहुंचूंगा, means that what is that point, it is the point when I am going for an infinite dilution. जब मैं इतनी डाइल्यूशन करूंगा कि अब इसकी कनेक्टेंस फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहे, जब इंट्रायोनिक इंटरेक्शन लीस्ट हो गए, जीरो हो गए, इट इज अप्रोचिंग टू द जीरो, मींस दैट यहां पे मींस व्हेन डाइल्यूशन इज इनफिनाइट, डाइल्यूशन इज इनफिनाइट,
या हम इसको ऐसे भी बताएंगे कि जब कंसंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो, व्हेन इट इज अप्रोचिंग टू द जीरो, जब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो दैट टाइम इट विल बी हैविंग अ मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल बी हैविंग अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी व्हेन वी आर गोइंग फॉर द इनफिनाइट डाइल्यूशन, मींस दैट we are diluting the solution to such an extent that the interionic interactions now are approaching to zero, means that or we can say when the concentration is tending to the zero. So means that what is happening, the molar conductivity of that solution at the infinite dilution will be maximum. ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम एक्स्ट्रापोलेशन, हम इसको ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ एंड इट विल कट देयर y-axis at this point, and this point will be the molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution, and it is represented by this with a knot. ठीक है, and इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, या इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, and this is the maximal value of a molar conductivity of a strong electrolyte when we are going for an infinite dilution. तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, या molar conductivity at infinite dilution, and in case of a strong electrolyte we can get this molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity by extrapolation of the graph, and by that means we can get the delta m naught of a strong electrolyte. ठीक है, so delta m naught of a strong electrolyte can be determined from this graph. ठीक है, clear? So that is known as the molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity, and it is the maximum value of the molar conductivity. ठीक है, for any electrolyte when we are maximally going for the dilution, means when we are going for the infinite when we are going for the infinite dilution or when the concentration is approaching to the zero. अब अगर आप देखो ना ये रिलेशन जो है, चलो थोड़ा बहुत ये रिलेशन जो है, एक्चुअली दिस रिलेशन इज कमिंग फ्रॉम हियर, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी. ग्रेजुएट लेवल में हम पढ़ते हैं, एमएससी लेवल पे भी हम इसको पढ़ते हैं, इट इज नोन एज डिब्बे-हक्केलॉन-सेगर्स इक्वेशन. Debye-Hackelon-Seghers equation, and it is we are plotting a graph between this delta m and concentration of the solution, and we are getting the graph like this way. ठीक है, so यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला इनके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, वो ये कि मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजिंग स्लोली या एट अ स्लोअर पेस इन ऑन डाइल्यूशन. क्लियर, जब हम डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है एट अ स्लोअर पेस पे से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. एंड आल्सो वी कैन गेट द डेल्टा एम नॉट वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन by extrapolating the graph. That point we will write out here. What is that? The delta m value of a strong electrolyte increases at a slower pace on dilution. ठीक है, then the weak electrolyte. Moreover, delta m naught value of a strong electrolyte can be determined from the by extrapolation of the graph between and concentration. ठीक है, so now इसके बाद हम जाएंगे what is happening to the weak electrolyte. तो weak electrolyte को क्या होगा. ठीक है, तो जब हम weak electrolyte की बात करते हैं
अगर मैं बात कहूंगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो दो, चलो ये क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग फॉर, दिस both these two electrolytes are having same concentration, ठीक है। when they are having the same concentration, मुझे आप बताओ कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी at the same concentrations, which one will be having maximum this molar conductivity or conductance of the solution? So it will be for the strong electrolyte because it is completely ionized in the aqueous solution. लेकिन weak electrolyte it is not completely, it is partially ionized in the aqueous solution. पहला लेक्चर है मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो वहां पे completely जब ये ionize होता है in aqueous solution, more number of ions will be, conductance will be more, means molar conductance will be more. But in case of a weak electrolyte, where there will be lesser number of the ions, so lesser number of ions means lesser conductance means lesser molar conductivity. Clear? So वही पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा at moderate concentrations अगर हम कहेंगे, या at moderate concentrations अगर हम कहेंगे, this the molar conductivity value of a weak electrolyte is lower than that of the strong electrolyte, ठीक है ना, under moderate concentrations, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूंगा at moderate concentrations the molar conductivity of a weak electrolyte is lower than that of strong electrolyte. At moderate concentrations, the molar conductivity of a weak electrolyte is lower than that of a strong electrolyte. ठीक है। मॉडरेट कंसंट्रेशंस की अगर हम बात करेंगे, अगर दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर है या इन बिटवीन कंसंट्रेशंस है, मॉडरेट कंसंट्रेशन मींस नीदर हायर वी आर हैविंग ए हायर वैल्यू, नीदर वी आर हैविंग ए लोअर वैल्यू। अंडर मॉडरेट कंसंट्रेशंस जो ये मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो कम होती है देन दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज number of the ions in case of a weak electrolyte is less than that of the number of the ions in case of a strong electrolyte under same concentrations, ठीक है। now what is happening to the molar conductivity, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे बताऊंगा। so अगर मैं कहूंगा if you are having a weak electrolyte, let us suppose you are having an acetic acid, मैंने इसकी एग्जाम्पल इससे पहले भी दी है, and you are diluting the solution. So what is happening to the molar conductivity? जब आप more and more water इसमें ऐड करोगे, what is happening to the molar conductivity? आपको मैंने एक पॉइंट बताया है कि जब भी हम एसिटिक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इसको डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, the reaction will be under equilibrium and it will give us acetate ion and hydronium ion, ठीक है। so already lecture number 2 उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है। तो as per the Lecher-Lear's principle जो आपने 11th में पढ़ा है कि when we are you are diluting the solution, when you are increasing the water, the reaction will move in a direction where this water is getting consumed. So this water is getting consumed in the forward direction. Means that when we are diluting the solution of a weak electrolyte, what is happening? There occurs the increase in the ionization of the electrolyte. When there is occurring increase in the ionization of the electrolyte, there will be the more of the ions formed. When there will be more number of ions formed on dilution, there will be increase in the molar conductivity of the solution. So molar conductivity of the solution will be enhanced, will be increased in case of a weak electrolyte. तो यहाँ पे मुझे बताओ कि बाय डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे स्टीपली इंक्रीज होगी कि यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज स्टीपली, बहुत ही फास्टर, एट ए फास्टर रेट अगर हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी कहाँ पे इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, दैट विल बी फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट the number of the ions is increasing on dilution. यहाँ पे for a strong electrolyte the number of the ions is remaining the constant. यहाँ पे number of ions are remaining the constant. But in case of a weak electrolyte the number of ions are increasing. Number of ions when number of ions are increasing, so the molar conductivity of the solution is increasing at a faster pace than that of a weak electrolyte on dilution. Clear? So that would be our main point. So in case of a
weak electrolyte, the molar conductivity of the solution increases with the increase in dilution due to increase in the ionization of the electrolyte, due to increase in the ionization of the electrolyte, which in turn increases the number of the ions in the solution. Which in turn increases the number of the ions in the solution and hence increases the molar conductivity. तो यहाँ पे molar conductivity जो है in case of a weak electrolyte, the delta molar conductivity of a solution increases with the increase in the dilution due to increase in the ionization of the electrolyte, which in turn increases the number of the ions in the solution and hence increases the molar conductivity. वो हमने already पहले ही लिखा है, which in turn increases the number of the ions in the solution and hence increases molar conductivity. और इसका मतलब है कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो more and more ions will be formed, ionization will be more, so more and more ions will be formed and there will be the increase in the molar conductivity of the solution in case of a weak electrolyte. लेकिन एक पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इंक्रीज जो मोलर कंडक्टिविटी हो रहा है वो इट इज इंक्रीजिंग एट ए फास्टर पेस देन दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ द आयन्स इज रिमेनिंग द सेम, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, बट हियर इन केस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ द आयन्स आर increasing with the increase in the dilution. With the result, there will be a steep increase in the molar conductivity of the solution compared to that of a weak electrolyte, compared to that of a strong electrolyte. Clear? So that will be our point. So let us go for its graphical representation. अगर हम इसकी graphical representation देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखोगे ये कंसंट्रेशन यहां से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है डाइल्यूशन यहां से इंक्रीज हो रहा है. तो जब हम ग्राफ देखते हैं so we are getting a hyperbolic curve in case of weak electrolyte when we are plotting a graph between delta m and concentration of the solution. ठीक है, तो we are getting a hyperbolic curve. तो अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं इसको. अगर हम देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग जब हम, ठीक है, जब हम ये डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द concentration when we are increasing the dilution, what is happening to the molar conductivity? The molar conductivity of the solution is increasing, है ना. अगर आप यहाँ पे देखोगे डाइल्यूशन इस पॉइंट पे तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इतना है, ठीक है. लेकिन जब हम इस पॉइंट पे देखेंगे डाइल्यूशन हमने इतनी इंक्रीज की तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इतना है. लेकिन जब हमने यहाँ पे डाइल्यूशन की, यहाँ तक हम पहुंचे तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ पे है. लेकिन जहाँ पे हमने और डाइल्यूशन किया, थोड़ा बहुत और डाइल्यूशन किया, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एब्रप्टली. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज हैविंग ए मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, so that is what my point of concern is. So means that on diluting the solution, the molar conductivity of the solution is increasing because there is an increase in the ionization of an electrolyte. और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे maximum ionization होती है, ठीक है ना. तो with the result there is an abrupt increase. The number of the ions is increasing at a faster pace in this region. With the result there is an increase in the number of the ions, and there is an increase in the number of the ions. There is an increase in the value of the molar conductivity. लेकिन एक point यहाँ पे important है, ठीक है. The graph, the curve, what we are getting here, this curve is parallel to the y-axis. ठीक है, तो when we are talking about the molar conductivity at the infinite dilution, means that when concentration is approaching to the zero, or when we are diluting the solution to an infinite extent, so we should get the molar conductivity at infinite dilution for the weak electrolyte. But can we get it from this graph?
the molar conductivity of a strong weak electrolyte at infinite dilution, यानी limiting molar conductivity का value हमें मिल सकते हैं from this graph? No. Why we are not able to get the molar conductivity of limiting molar conductivity of a weak electrolyte in case limiting molar conductivity of a weak electrolyte we are not able to get out from this graph? Why we are not getting it? Because the curve is becoming almost parallel at infinite dilution. It is becoming almost parallel to the y-axis. So by extrapolating the graph, if you are extrapolating the graph, it will never meet. It will never touch the y-axis. With the result, we are not able to find out the maximum molar conductivity or the limiting molar conductivity of an electrolyte in case of a of an electrolytic solution in case of a weak electrolyte. So weak electrolyte को के हमें maximum molar conductivity at infinite dilution हमें नहीं मिलेगा from the graph, and same is actually determined from the Kohl-Rauch's law. From one of the applications of the Kohl-Rauch's law हम फिर ये determine करते हैं उससे limiting molar conductivity of a weak electrolyte. ठीक है, तो हमें पढ़ना है उसके बाद. तो now यहाँ पे हमारा point बन रहा है it is not possible to find out the limiting molar conductivity of a weak electrolyte from the graph because at infinite dilution the hyperbolic curve becomes almost runs almost parallel to y-axis. It is not possible to find out the delta M naught of a weak electrolyte from the graph because at infinite dilution the hyperbolic curve runs parallel to the y-axis, making it difficult, make it impossible to find its value by extrapolation. So it is not possible to find out the delta M naught value of a weak electrolyte from the graph because at infinite dilution the hyperbolic curve runs parallel to the y-axis, making it impossible to find its value by extrapolation of the graph. तो extrapolation of the graph से हम इसको determine नहीं कर सकते हैं, ठीक है? So this is all about the molar conductivity, the effect of the molar conductivity by dilution. Now let us go for one to this conceptual questions. तो उसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे. The molar conductivity of sodium nitrate increases with the increase in dilution. Multiple choice question है. Due to the molar conductivity of sodium nitrate increases with the increase in dilution due to a increase in ionization of sodium nitrate, increase in mobility of ions, decrease in inter-ionic interactions,
charge of the ions. So अगर हम देखेंगे सोडियम नाइट्रेट को, कि सोडियम नाइट्रेट अगर हम देखेंगे तो वहां पे डेल्टा एम जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्या वो इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट की वजह से, इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयन से, डिक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन से, कि इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द आयन से. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट, लेकिन सोडियम नाइट्रेट अगर हम देखेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमें रूल्ड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन इट इज ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू टू आयंस एट एनी कंसंट्रेशन. सोडियम नाइट्रेट क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयंस, क्या मोबिलिटी स्पीड ऑफ द आयन इंक्रीज हो रहा है? यस, स्पीड ऑफ द आयन इज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें आ रहा है. लेकिन चलो हम थर्ड ऑप्शन फिर, हमेशा जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाओगे ऑलवेज रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. ठीक है, ये नहीं है कि आपको मिल गया आंसर इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ द आयन आपने इसमें टिक मारी, क्योंकि बहुत दफा आई हैव फेस्ड सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई फॉल द प्रे ऑफ सच थिंग्स. मुझे लगा कि ये आंसर है, मैंने टिक मार ली, अनसर्कल किया, ठीक है, डार्कन किया वो सर्कल, सेकंड सर्कल, तो आई थॉट मे बी आई हैव डन द क्वेश्चन, बट जब मैं बाहर निकला तो इट वाज रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, डिक्रीज इन द इंटरआयोनिक इंटरेक्शंस, का इंटरआयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहे. यस, देयर इज डिक्रीज इन द इंटरआयोनिक इंटरेक्शंस आल्सो. नंबर 4, इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ दैट. मैंने पहले कहा कि डाइल्यूशन से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट किया जा रहा है. लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सो विच वन इज करेक्ट? ठीक है, इज दिस द डिक्रीज इन द इंटरआयोनिक इंटरेक्शंस और इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस? तो आपका आंसर होगा सर दोनों आंसर से, लेकिन यहाँ पे तो बोथ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना है. तो अगर हम देखेंगे प्राइमरी इफेक्ट जो है डाइल्यूशन का, दैट इज डिक्रीज इन द इंटरआयोनिक इंटरेक्शंस. और इस डिक्रीज, जब ही डिक्रीज in the there will be when there is a decrease in the interionic interactions, then only there will be an increase in the mobility of the ions. So the right answer will be C part. आपने B part आंसर लिखा, wrong. ठीक है, so it is the C part. Now the question is a different one. अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखूंगा both B and C, अगर क्वेश्चन मैंने little bit change किया, ठीक है, then it will not be the decrease in the it will be will be decrease in the interionic interactions, it will be D part. It will be decrease in the interionic interactions, it will be increase in the mobility of the ions. Okay? So thanks a lot. With this, we have finished this portion. So our next lecture will be Kohlrausch's law. Do study it, and whenever we will go for this lecture here, so that you can understand it in a better way. So please share this video as far as possible. Thanks a lot.